Hey Raja, today we'll do the topic interest on debentures. Tell me, पहली चीज debentures suddenly loan दी तरह है? Yes or no? We have discussed. जब भी shares issue करते हैं, that's our own capital. Shares, shareholders are the owners. Debenture holders are the creditors. जिन्होंने सानू credit ਦਿੱਤਾ, loan ਦਿੱਤਾ. They financed their company in some way. Yes or no? So debentures ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ pay करते? Interest. Interest or dividend, both are always calculated on face value. So read the first line. Interest on debentures paid is calculated at fixed rate. Interest हर साल change होता loan का? No. So it is calculated at a fixed rate on the paid up value. If not fully paid up or on its nominal face value, if it is fully paid. Paid up value क्यों? सोचो. If debentures ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੋ, loan normally ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿੱਧਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਇਨ ਦ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੋਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਬੈਂਚਰਸ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇजेस ਆਉਂਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ। ਯੈਸ ਔਰ ਸਿਮਰ, ਅਗਰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਔਰ 10 ਲੱਖ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਹੈ। ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ 10 ਲੱਖ ਜੋ ਹਲੇ 50 ਪੇਡ ਹੈ, 50 ਨॉट ਪੇਡ ਹੈ, कॉल ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, मतलब 10 लाख ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 लाख ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਸਟਿਲ 5 लाख as per rupees 50 out of 100. Face value was 100, you received as per 50, 50 was uncalled, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਕਿੰਨੇ? 5 लाख rupees। ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ 10 लाख ਦਾ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ? No. So if it is fully paid, then you will calculate on the face value, that is nominal value. Yes or no? Agree? But अगर वो fully paid नहीं है, then on the paid up value, फिर 5 लाख दे दोगे। एग्री विद दिस पॉइंट? यस और नो? नेक्स्ट, इंटरेस्ट मे बी पेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली एज इट इज स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ इशू। इशू ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਸ ਔਰ नो? ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ 9% ਡਿਬੈਂਚਰਸ, 10% ਡਿਬੈਂਚਰਸ, 8% ਡਿਬੈਂਚਰਸ, ठीक है? Like 9% debentures. It is payable even if the company incurs loss. कंपनी ਨੂੰ प्रॉफिट होए, कंपनी ਨੂੰ लॉस होए, इंटरेस्ट पे करोगे या नहीं करोगे? क्यों करोगे? Because it is not an appropriation of profit. It is a charge against profit. Appropriation की अंदर से distribution of profit. Distribution happens only when there are available profits. And charge means खर्चा पे करना ही करना। Yes or no? Charge means खर्चा आपसी पे करना ही करना। So it is a charge against profit, means it has to be paid even if the company is in losses. Okay. Next thing, it's an expense. Expenses are debited or credited? Debited as per which rule? Personal, real, nominal. Debit all expenses and losses as per nominal rule. Personal person on the person, receiver and giver. Debit the receiver, credit the giver. Nominal accounts, and तो याद रखो, debit all expenses, and आया ना अंदर, expenses and losses, credit all incomes, incomes and gains. Real, debit what comes in, credit what goes out. Okay, so it's an expense. Expense debit करोगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, किन्हों पे करने पैसे? डिबेंचर होल्डर्स। सो ड्यू कर दो टू डिबेंचर होल्डर्स। जब पे करोगे तो डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, पेमेंट हो गई। एट द एंड ऑफ द ईयर एक्सपेंसेस ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸਓਪੀਐਲ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲॉस। ਸੋ ਐਸਓਪੀਐਲ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਐਸਓਪੀਐਲ ਦੀ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ while we were doing the company balance sheet। ਯੈਸ ਔਰ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਐਸਓਪੀਐਲ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸ ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ which included revenue from operations. Starting was the income side, which included revenue from operations and other incomes. So total revenue आ गया सी। After that, we discussed there are 7 expenses in the format of SOPL, statement of profit and loss. It had been covered in your balance sheet lesson, vertical balance sheet. So first was cost of material consumed,
Second was purchase of stock and trade. Third was change in inventories of WIP, finished goods and stock and trade. Then WIP, finished goods and stock and trade. Then FC means finance cost. Then depreciation and amortization. Employees benefit expenses and other expenses. So finance cost, डिबेंचर इंटरेस्ट हटा किया, फाइनेंस का खर्चा, यस और नो? फाइनेंस कॉस्ट एक P&L ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੋਸਟ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਕਮਸ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੋਸਟ। ਥਰਡਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਆਲਸੋ ਨਾउ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਪੇਡ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, यस और नो? सो इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। सो कितने पाओगे, एसओपीएल डेबिट इन द फाइनेंस कॉस्ट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ट्रांसफर करता, राइट ऑफ करता। एग्री विद द एंट्रीज, एनी डाउट? नो, लेट्स चेक द एग्जांपल। रीडर, टाइम स्पोर्ट्स लिमिटेड issued how many debentures? 15,000, 10% debentures of 100 each, फेस वैल्यू कितनी होगी? 15 लाख, इंटरेस्ट रेट इज 10%। ऑन इशू किस दिन कितने? 1 अप्रैल 22। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, सारे डिबेंचर सेल हो गए, इशू हो गए, एंड फुली पेड अप, सारे पैसे भी आ गए। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू द इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है, एक साल दी एंट्रीज ही पूछिए। इशू किस दिन कीता? 1 अप्रैल 22। ईयर विल एंड ऑन 31 मार्च 23, यस और नो? सिंगल ईयर क्वेश्चन, ओके। इंटरेस्ट किस दिन पे करते रहे? हाफ ईयरली बेसिस। मृदुल, अगर 1 अप्रैल ਨੂੰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ और हाफ ईयरली बेसिस अप टू 31 मार्च ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, फर्स्ट हाफ ईयर कद खत्म होगा? 30 सितंबर ਨੂੰ, and second half year will be completed on 31 March, दो दिन, means you will pay interest for 6 months. First half year comes on 30 September and second half year comes on 31st March, yes or no? 30 September 22 and 31st March 23, ठीक है। ठीक है, तो मृदुल डेट्स क्लियर होगी ताजे, 30 सितंबर एंड 31st मार्च। टेल मी फेस वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी? 15 लाख। 15 लाख ते अगर फेस वैल्यू है, इसमें तो इंटरेस्ट रेट इज 10%, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਈਅਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਈਅਰ ਦਾ ਸਿਮਰ ਇਕੱਠਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੋ ਪਾर्ट्स ਚ? हाफ ईयरली लिखे ना, मींस यू विल कैलकुलेट फॉर 6 months each, so 15 lakh 10% means 1,50,000, for half year it becomes 75,000, so 30 September ਨੂੰ 75,000 ਦੀ दोनों एंट्रीज पुट कर दोगे, it's an expense, so debenture interest account debit to debenture holders and debenture holders to bank. Same entries will be repeated on 31st March 23, debenture interest to debenture holders, debenture holders to bank। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, that's okay, clear। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 1,50,000 ਦਾ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, at the end of the year expense is transferred to P&L, so ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗਈ SOPL account debit finance cost to debenture interest, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ to P&L, ਐਗਰੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਚ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। means total 5 entries will be there, 2 for 30 September 22, 2 will be for 31st March 23, and third last one also for 31st March for PL, okay। करो बेलाइन, पहला कुछ नोट्स लिखो रिलेटिंग टू, केड़े केड़े पॉइंट्स लिखोगे? The first one will be interest on debentures is an expense, it is a part of finance cost, so it will be debited in the SOPL, matlab it is put as an expense in the SOPL, in the finance cost। Next thing,
It is paid at a fixed rate, yes or no? On face value if these are fully paid. But if not fully paid, तो paid on the paid up value. ठीक है? After that, rate of interest कितने लिखे ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ name ਦੇ ਅੱਗੇ prefix कर ਦਿਓ. Like we say 9% debentures, 10% debentures. ठीक है? And it is paid even if the company incurs loss because it is a charge against profit. It is a charge against profit. And last thing, it can be paid quarterly, half yearly, or yearly as specified in the terms of your issue. In a terms लिखो पहले. Quick. देखो रजा एंट्रीज डिस्कस हो गया नोट कर ली एक बार फर्स्ट एंट्री क्या होगी जब इंटरेस्ट ड्यू कितना इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस यू हैव टू पे टू डिबेंचर होल्डर्स सो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट करता टू डिबेंचर होल्डर्स लायबिलिटी क्रिएटेड now after that you'll pay them debenture holders to bank after that P&L charge कर दे expense so SOPL debit in which type finance cost to debenture interest okay so question भी clear हो गया कितना करना वाला एक और क्वेश्चन डिस्कस करते पहला चेकआउट बीजी लिमिटेड issued 2000 12% debentures of 100 each on 1st April 22 at a discount of rupees 5 and redeemable at a premium of rupees 5 issue at discount of rupees 5 redeemable at premium of rupees 5 कल कितने से issue at discount redemption at premium वही कैसा है the issue was fully subscribed according to the terms of issue the interest on debentures is payable half yearly on 30 September and 31st March. Pass necessary journal entries for issue of debentures, debenture interest for the year ending 31st March and transfer of interest to SOPL. देखते क्यों है कल वाला टॉपिक और आज वाला टॉपिक कंबाइन हो गया हाउ मेनी डिबेंचर्स 2000 व्हाट्स द फॉर्मेट 100 रुपीज से डिबेंचर इशू कर रहे हो एट अ डिस्काउंट ऑफ 5 मींस बैलेंस इज 95 लमसम 95 rupees on issue 100 minus 5 yes or no and redemption is at 105 because it's at a premium of 5 rupees so की कल केड़ा केस च पॉइंट सीखा सी case 6 yes or no so as per case 6 can you solve the four entries for this four entries which are two entries किदियां issue दी और two किदियां redemption दी but redemption दी entries उन्होंने पूछी नहीं है so ए वाली entries तो बच गए you only put two entries for the issue but POR वाला केस तो सोचोगे ना POR and loss on issue so first entry will be bank account debit to debenture application and allotment 2000 into 95 yes or no second will be debenture application and allotment debit 95 discount on issue करना है या loss on issue loss combined 5 and 5 10 rupees according loss on issue 10 rupees into 2000 two 12% debentures, simple face value 2000 into 100, 2 lakh, and to premium on redemption as per 5 rupees, 10,000 rupees. Entry match हो गई issue दी सिमर yes or no? Just 100 rupees according सोच के into 2000 debentures yes or no? So issue date 1st April ਦੀ entries हो गई. After that ਤੁਸੀਂ किहदी entries पानी interest ਦੀ. Interest is on 30 September and 31st March. मैंने दसो interest is calculated on face value. Fully paid है face value कितनी tell me 2000 into 100 2 lakh 2 lakh ਤੇ ਕਿੰਨਾ interest है 12% ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 12% ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ so 6 by 12 so 2 lakh into 12% becomes 24000 ਹਾਫ ਈਅਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ 12000 एंट्री की सिक्की डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक सो 30 सितंबर ਨੂੰ 12000 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗਈ 31st ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗੇਨ 12000 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗਈ पूरे साल च कितना इंटरेस्ट पे होया पूरे साल 24 will be transferred to SOPL debit to debenture interest 24,000
ओके, am I clear? सॉल्व करो। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, 6th ਕੇਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, नेक्स्ट देखो राजा, पार्थ हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड issued on 1st July 2022 1 lakh debentures, name की given है 7% debentures of 10 each for subscription at 10% premium, payable 4 on application and the balance on allotment. Tell me debenture कितने था सी? 10 rupees, 4 on application, issue कितना कितना? 10% premium थे, means 10 plus what? 1, total 11, 11 so 4 rupees on application and balance 7 on allotment. Agree? 4 and 7, yes or no? कोई doubt इस चीज? Means format की बने बच्चा, 1 lakh debentures, 4 rupees application, 7 rupees allotment, premium 10 या किस स्टेज थे? Means कितने लाओगे? Allotment 6 plus 1. The debentures were subscribed and due amounts were received. कि दो stages है, कितनी entries आओगे? How many entries? 4 entries. Issue ਦੀ 4 entries ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆंसर? बैंक अकाउंट डेबिट टू 1st July 22 इशू डेट, फर्स्ट एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1 lakh into 4 and debenture application into 7% debentures. Clear? 4 lakh. Third entry, same day, debenture allotment the entry बोलो। debenture allotment debit how much? 1 lakh into 7 to 7% debentures 6 lakh and to securities premium 1 lakh. Everyone yes or no? So third entry भी clear होगी। Then bank to debenture allotment 7 lakh. 4 entries clear। Issue the basic दो entries है, two stages है there। Subscribed, due amounts were received, entries done. Interest was payable on 31st March each year। पूरे साल ਦਾ ਇਕੱਠਾ या दो parts? कहते we pay on 31st March, means साल ਦਾ इकट्ठा। You pay once a time, once a year, yes or no? Entry for interest also is to be passed. Tell me interest is calculated on normally face value, face value कितनी हो? 10 according 1 lakh debentures into 10 कितनी face value होगी? 10 lakh into interest rate full year ਦਾ इकट्ठा पे कर दे, but जाना उस अकॉर्डिंग तो 10 lakh into 7% चाहिए, but की पूरा साल हो गया, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ 1 year ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, but today you know that debentures were issued on 1st July, तो कितने months हुए? July, August, September, October, November, December, January, February, March, 9 months। समझ रहे हो? इस साल 9 months का इंटरेस्ट पे होगा, after this year second year तो it will be paid for the whole year, yes or no? Means you will calculate it for 9 months। Everyone yes or no? So 10 lakh into 7% into 9 by 12, full 9 months का आ गया 52,500 डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, एंड पूरे साल का इंटरेस्ट इकट्ठा ट्रांसफर टू एसओपीएल डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट इन द फाइनेंस कॉस्ट। ये सब कुछ किस दिन हो रहा है? 31st March 2023। yes or no? So any doubt? So do this question, next we'll do in the next class।